Hi guys, welcome to my channel. And today we'll be studying another topic, that is translocation in the phloem. In the last video, I guess I told you about the xylem in the phloem system, the stellar system present in the root part, and how is the conduction of water and solutes and sugars taking place. So now I'll be telling you what translocation in the phloem basically looks like and how is it done. In the previous video we studied transpiration, and in the last video I guess we studied the symplast and the apoplast pathway. So if you need to know what are those, so just go back to those videos, watch them, and then come back to this video. So now we'll start what translocation really means. Translocation is basically the transfer of the substances from one part to another, but in this we're talking about phloem. So in phloem we'll talk about the sugars, water, etc. So translocation is basically the movement of phloem sap over long distances through the phloem. Phloem sap basically consists of organic substances and inorganic substances, but one and the most important part is the photosynthates that is present in that, and photoassimilates, and these two are referred to as the products of photosynthesis. So what is translocation pathway? Translocation pathway is how is the sap being translocated to long distances. The cells of the phloem that conduct sap throughout the plant is called as sieve elements. अब sieve elements की भी दो parts होते हैं, sieve tube elements and sieve cells. So sieve cells are majorly present in gymnosperms and sieve tube elements are majorly present in angiosperms. So what are sieve tube elements? They are elongated and living cells. But as we had studied about the xylem, I told you that in xylem they are always dead. The conducting tissues are always dead. So in sieve tubes, this is the major difference in phloem. They're elongated and living cells. At the time of their maturation, that is when they are being matured, in the process of being matured, many changes occur that lead to breakdown, loss of nucleus, ribosomes, Golgi bodies, etc. And at maturity, they have functional plasma membrane, smooth endoplasmic reticulum, and plastids. Sieve elements जो होते हैं, they are joined end to end with pore filled sieve plants between to make a sieve tube. अब जितने भी sieve tube, अब sieve elements जो होंगे, obviously elements हमें पता चल रहा है कि element is a small part and tube is a bigger part. So elements, when a large amount of elements are connected, it leads to the formation of sieve tubes. So when these elements are joined end to end, the pore fills in and then makes a connection, and thus it is called as a sieve tube. Now sieve plate pores are open channels. heavy channels जो होते हैं open होते हैं. In sieve cells, gymnosperms, there is no sieve plate and all the sieve cells are similar. Okay, now sieve tube elements which are present in angiosperms, they also contain phloem protein that is called as the P protein. Basically इसका function ये होता है कि कोई भी damage अगर हो जाती है sieve elements में, तो वो जो उनका function होता है plug up करना sieve plate pores को. ठीक है. आफ्टर अलॉन्ग ईच sieve ट्यूब देर इज़ अ नॉन कंडक्टिंग टिश्यू जिसका कोई फंक्शन नहीं होता. ऐसा माना गया कि कंडक्शन में इसका कोई फंक्शन नहीं होता, इसलिए हमने उसको बोला है नॉन कंडक्टिंग सेल. लेकिन उसके साथ जो होता है, सॉरी, उसका जो नाम होता है उसको हमने बोला है कंपेनियन सेल, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ नर्व सेल्स. ठीक है. कंपेनियन सेल जो होता है वो sieve ट्यूब से कनेक्टेड होता है बाय प्लाज्मोडेस्मेटा, जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, जो इसके बारे में वी हैड टॉक्ड अबाउट इन एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे. हमने बात करी थी. प्लाज्मोडेस्मेटा एंडिंग्स होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जिसके थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है. तो यहाँ पे हमने बताया कि जो sieve ट्यूब और कंपेनियन सेल्स होते हैं, दे आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय प्लाज्मोडेस्मेटा. ऑलराइट. एंड कंपेनियन सेल्स जो होते हैं, दे हैव, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, न्यूक्लियस होता है, गोल्जी ऑपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. और कंपेनियन सेल्स दे आर कंसिडर्ड टू बी द नर्व सेल्स ऑफ द sieve tube elements. Nerve बोल रही हूँ मैं बार बार, I'm sorry, but it's nerve cells. Nerve cells basically they take care of everything required by the sieve tube elements. तभी उनको हमने नॉन कंडक्टिंग सेल्स बोला है, क्योंकि वहाँ पे कंडक्शन में उनका कोई फंक्शन नहीं होता. कंडक्शन में जो सारा फंक्शन होता है वो sieve tube elements का होता है. लेकिन इसीलिए इनको हमने साइड पे रखा है क्योंकि बेसिकली दे आर एक्टिंग एज नर्व सेल्स टू देम. अब टाइप्स भी होते हैं कंपेनियन सेल्स के. देयर आर वेरियस टाइप्स कंपेनियन सेल्स के. ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स, ट्रांसफर सेल्स एंड इंटरमीडिएरी सेल्स. ठीक है. तो अब इन तीनों में एक बात कॉमन है, ऑल ऑफ देम हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया. ये तीनों में चीज़ कॉमन होती है.
ठीक है। तो उसके बाद डिटेल में हमने समझाया है व्हाट आर ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स, ट्रांसफर सेल्स एंड इंटरमीडिएट सेल्स। सो ऑर्डिनरी सेल्स जो होते हैं, ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स होते हैं, दे हैव स्मूथ वॉल्स। जो वॉल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज स्मूथ एंड फ्यू टू नो प्लाज्मोडेस्माटा। दैट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है या तो नहीं होता, या होता है तो वो उन सेल्स से कनेक्टेड होता है जो सीव सेल से अलग होते हैं। बाकियों में क्या था, सीव ट्यूब सेल से कनेक्टेड होते हैं ये कंपेनियन सेल्स, लेकिन in case of ordinary companion cells, they have plasmodesmata, they have few plasmodesmata, or they do not have any plasmodesmata. But if any plasmodesmata is present, it is connected through to the cells other than the sieve tube cells. ठीक है। उसके बाद sieve tube सेल्स के अलावा मतलब जितने भी सेल्स होते हैं उनसे ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बनाता है। Next is the transfer cell. Transfer cells, they have folded walls and adjacent to the northern seed cells, and they allow larger areas for transfer. इंटरमीडिएट सेल्स क्या होते हैं, उनके पास जो वॉल्स होती हैं वो बेसिकली स्मूथ होती हैं एंड दे हैव न्यूमरस प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब बहुत सारे। इंटरमीडिएट का मतलब यही है कि वो दो सेल्स को कनेक्ट कर रही हैं, इंटरमीडिएट एरिया में प्रेजेंट होकर दोनों सेल्स को कनेक्शन में हेल्प करती हैं, तो उसमें बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा होंगे जो हेल्प करते हैं कनेक्शन में, इसलिए उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट सेल्स। ट्रांसफर सेल्स बेसिकली देयर फंक्शन इज ट्रांसफर द शुगर फ्रॉम द एपोप्लास्ट टू द सिम्प्लास्ट ऑफ द सीव ट्यूब एलिमेंट्स and companion cell complex in the source. Intermediary cells का function in the simplest transport of the sugars from the mesophyll cells to the sieve tube elements, companion cell complex in the plants. Now, what is the pattern of translocation? Phloem saps are translocated in the phloem from the source to sink. Source क्या होता है, जो produce कर रहा होता है बहुत सारे photosynthetes which are required by the plants, and ये जो photosynthetes होते हैं, they are produced in more amount, that is the amount which is required for its metabolism, और उसके अलावा और ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं photosynthetes, तो उसको हम बोलते हैं सोर्स। एग्जाम्पल इज़ लीव्स। और सिंक होता है जो इम्पोर्ट करवाता है, उसके पास आता है, तो उसको हम बोलते हैं रूट्स। ठीक है। अब उसके बाद the direction is bidirectional, as the direction is variable, it can be upwards and downwards. अब phloem की जो ट्रांसलोकेशन होती है वो दो तरीके की हो सकती है, upward downwards, so therefore it is variable and therefore it is referred as bidirectional, लेकिन xylem के केस में it is always unidirectional। ठीक है। नाउ अब आगे हमारे पास और टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू दिस यूनिट, एंड विच इंक्लूड्स द मिनरल्स और द मटेरियल्स ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम अनलोडिंग एंड लोडिंग. All of them will be prepared in the next video, and till that stay tuned and just be prepared with all this because it is important from that point of view. And if you guys have any doubt, comment down below. Any questions, comment down below, and do not forget to like, share and subscribe, guys. Thank you.